Okay, welcome back to the stream. We are back. Okay, let's see how many people have come and then we'll be starting again. Come on, give me up a hi in the chat so that I know you have come. And also यार like करो stream को. Hi Akshat Jain, hi Lakshman. Okay. Hi Prince, hi Divya. Okay. Finally, we have a lot of people watching me right now. That's nice. Gonna wait for like 2 more minutes, okay? Sir, I'm new here. Can you tell me should I follow or not? Yeah, sure, obviously. Are you a lead code programmer? Like, do you solve lead code or you want to start lead code? Yes, yes, Prince. I will solve the Prim's algorithm, but not today because obviously एकदम से ऐसे I can't you know solve it up and I have already sessions planned. तो मतलब क्या होता है कि sessions already planned होते हैं. So I'll keep it in a to-do list and I'll solve it. I'll teach the Prim's algorithm maybe in the coming sessions. Don't worry about that. ठीक है? करेंगे करेंगे सॉल्व करेंगे पक्का करेंगे. Don't worry. Start lead code, but I've solved 2-3 questions before. Yeah, that's not an issue. Then you can come up. You can join us and you can solve questions along.
That's not an issue. And also tomorrow I am coming live with a marathon. तो यार कल बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? तो tomorrow it's gonna be fun. मजा ही आ जाएगा कल. Because it's like the first time I'm going live for so long. एकदम ऐसा 4-6 घंटे का लाइव फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है, ठीक है? So also here we have 17 people watching, and you know that the like button down there, it's just free of cost. So if you just hit the like button, I will be motivated to come live tomorrow again, है ना? तो like दबा दो जल्दी से. बहुत आराम से दिवेश, 1 साल बहुत होता है. ठीक है, let's start. So welcome back to the stream, guys. I'm Kabir Singh. I'm an avid coder. I'm the founder at Jigsaw Minds. I've mentored 25,000 plus people over YouTube Live, and I have a teaching experience of 1 year. So the subjects that I usually take are Java, C++, DS Algo, Flutter, and Dart. So basically, if you want to buy any subscription from Unacademy, you can use the code Kabir and get an extra 10% off. ठीक है? So थोड़ा सा एक चीज है which I would like to tell you about, that is Relevel. It's a test hiring platform by Unacademy. It's India's first test hiring platform. It has 50 plus companies including top startups. So 1,000 plus job opportunities, and you can attempt a test for free. कोई भी charges नहीं है. Just go on the website, register, make an account, choose what test you want to give, select a slot which is very limited. तो जल्दी से करो, और उसके बाद create a neat video resume, click submit and confirm your slots. That's all. You are done for the day. And then you have to give 1 day का time, and you have to solve your questions over there. ठीक है? तो बहुत सही चीज़ है यार, जल्दी कर लो. एंड 18 पीपल वॉचिंग, लाइक तो होता ही नहीं है. करो यार, लाइक क्यों नहीं करते? मतलब मेरे को बताओ, वाई डोंट यू लाइक द स्ट्रीम? लाइक ऐसा कुछ होता है कि मतलब लाइक बटन नहीं दबाना, या ऐसा कुछ? मतलब क्यों नहीं दबाते लाइक बटन? इतना अच्छा एक ऐसा थम्स अप है वहां पे, उसको दबा दो, क्या दिक्कत हो जाएगी उससे, है ना? तो दबा दिया करो यार. इट्स गुड. आई लाइक टू कम लाइव देन. बड़ा मजा आता है मेरे को देख के ऐसे 40-50 लाइक्स आ गए स्ट्रीम पे, अच्छा लगता है. सर नेक्स्ट वीक सॉर्टिंग सीरीज? हाँ, नेक्स्ट वीक सॉर्टिंग सीरीज है यार. नेक्स्ट वीक है ना? रुक जा, चेक करने दे. हाँ, नेक्स्ट वीक सॉर्टिंग सीरीज है. सो कैन यू गिव सम टिप्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस विदाउट एनी ब्रेक आफ्टर वी आर नॉट गेटिंग आंसर, वी गेट द लॉन्ग ब्रेक? देखो यार, there's no suggestion to that. It's just that you have to remain consistent. ठीक है? consistent रहना चाहिए तुम्हें. that if you're not able to solve the problem, don't give up. बस इतना ही कह सकता हूँ मैं. like I don't want to sound like a motivational speaker, but people do not get the answer to a solution and they give up कि भाई नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं. but then that's not the quality of a programmer. ऐसे नहीं होते ना प्रोग्रामर्स का मतलब होता है कि तुम सॉल्व कर रहे हो तो बैठो जब तक वो खत्म नहीं हो जाता. डोंट गेट अप अंटिल यू फिनिश अप द क्वेश्चन. तो जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता, उठना मत. एनोनिमस, आई डोंट डू कोड शेफ, आई एम सॉरी. अपकमिंग क्लासेस शेड्यूल, नेक्स्ट टुमारो 4 hour मैराथन सेशन फॉर LeetCode. डे आफ्टर टुमारो से स्टार्टिंग अ सॉर्टिंग सीरीज. तो मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट वगैरह का एक पूरा सीरीज है for 5 days, 10 sessions, and selection, bubble, insertion, merge and quick sort, पांचों कराऊंगा. उसके बाद 30th of October, this month end, 6 to 8 hours का क्या बोलते हैं, 6 to 8 hours का लाइव स्ट्रीम होगा. अगेन मैराथन सेशन, नॉन स्टॉप 6 to 8 hours. तो वो भी काफी सही होने वाला है. मतलब इट्स इंटरेस्टिंग यार, मजा आता है. खुद सोचो ना, मतलब इट्स लाइक कितना मस्त होगा ऐसा करने में. सर आपने सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस में डीएसए कितने टाइम में सीखा? देखो, यू कैन नेवर लर्न एवरीथिंग कंप्लीटली. मैंने आज तक भी सब कुछ नहीं सीखा है. हर दिन हम लोग कुछ नया सीखते हैं. सो यू कैन नेवर लर्न इट. बट हाँ, सी प्लस प्लस सीखने में
I took around 10 to 13 days, 13-14 days में फंडामेंटल्स क्लियर हुआ था, एंड उसके बाद आई डिड माई DSA. But it's mainly more of question solving. Sir, it take time, sometime 1 or 2 days to solve a question. That's not an issue. प्रवीर, कोई दिक्कत नहीं है. 2 दिन भी लग रहे हैं ना तो वर्थ है. अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है 2 दिन बाद तो वर्थ है 2 दिन लगाना उस पर. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वर्थ नहीं होता. इट्स वर्थ. तुमने अगर 2 दिन लगाए हैं एक प्रॉब्लम पे तो वो वर्थ है. ठीक है, चलो अगेन वी आर बैक विद अनदर स्ट्रीम. ठीक है, आज फिर से लीड कोड करेंगे, फिर से एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजा आएगा. 1 सेकंड रुको बस. ये टेलीग्राम चैनल कोई ज्वाइन नहीं करता जब तक मैं लिंक नहीं डालता. रुको, तुम लोगों ने तो ज्वाइन करना नहीं है टेलीग्राम, है ना? ये लो, चैट में लिंक है. ठीक है, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेना. पिन नहीं हो रहा बस मैसेज, कोई बात नहीं. हाँ ठीक है. और नाउ द क्वेश्चन दैट वी आर गोना डू इज लॉन्गेस्ट, मतलब इफ आई काइंड ऑफ टेल यू द एक्चुअल नेम ऑफ द प्रॉब्लम. 1 मिनट रुको यार, पूरा नाम मेरे को भी याद नहीं है. हाँ, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स. इट्स लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स. ठीक है, हाँ दीपेश बोला तो था मैंने कि हो जाएगा. ठीक है, सो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर, समथिंग रिलेटेड टू जो हमने पुराना प्रॉब्लम किया था. ठीक है, कुछ कुछ रिलेटेड है जो हमने पुराना प्रॉब्लम किया था, बिकॉज लास्ट प्रॉब्लम दैट वी डिड यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट सब एरे, लाइक द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम. अब ये वाला भी समथिंग सब एरे टाइप ही क्वेश्चन है, बट इसका मतलब ये है कि दिस इज अ सब स्ट्रिंग, मीन्स देर आर नॉट gonna be integers in this array, they're gonna be characters. So something like A, B, C, D, A, C, F, G, E, ऐसा कुछ. And we have to give the longest substring without repeating character. मतलब if you check this out, all the characters are different, but as soon as we come here, जैसे हम इस वाले A को इंक्लूड करेंगे तो ये और ये रिपीट हो गया, तो इसको नहीं दे सकते. ठीक है, लेकिन ये दे सकते हैं, देन ये दे सकते हैं, बट ये नहीं दे सकते. क्वेश्चन समझ आया? यस और नो? क्वेश्चन समझ आया? जल्दी बताओ यार, क्वेश्चन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब मेरे को बताओ थोड़ा. जल्दी बताओ, क्वेश्चन समझ आ रहा है? आना चाहिए क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में. ठीक है, if you are understanding the question, give me a yes in the chat. If you're not able to understand the question, give me a no in the chat so that I can go forward with a different explanation. ठीक है, जल्दी से yes या no लिखो चैट में. yes. चलो यार वापस से देखते हैं. ठीक है, अब अगेन इंटरव्यूअर मेरे सामने बैठा है ना? इंटरव्यूअर मेरे सामने बैठा है, ही इज आस्किंग मी अ क्वेश्चन एंड आई एम कंफ्यूज्ड.
कि भैया हाउ डू आई इम्प्रेस दिस इंटरव्यूअर, आई हैव टू इम्प्रेस दिस इंटरव्यूअर, जॉब तो चाहिए भाई, है ना. तो इफ आई गो समथिंग लाइक दिस दैट आई हैव ए बी सी ए बी सी डी बी ए, ऐसा कुछ है. ठीक है. एंड नाउ द इंटरव्यूअर वांट्स मी टू गिव द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स. मतलब he wants me to give him the output as something maybe a b c d या a b c या कुछ भी, but the answer will be a b c d क्योंकि यहाँ पे 4 characters हैं. Here I have 4 characters, so I will have this as my output. And I hope you are not able to, you are not having any background noises, right? कोई background noise तो नहीं आ रही ना guys, of kids shouting and all that? I hope ऐसा नहीं हो रहा है. So now what is going to happen is that again I'm going to go with the naive approach first. Naive approach मतलब पहले initially एक ऐसा approach उसको देना है which is not very good. Means again the way we did in that maximum sub array problem. एक array, दो sub array, तीन sub array, and let's compare. So the first iteration will be from A to all the characters, then from B to all the characters. है ना, यही किया था, याद है? We did the same thing in that question, that from the first element to all the characters, then the second element to all the characters, third element to all the characters. Yes or no? Yes or no, guys? Come on, 20 people watching. ठीक है. तो यार अब बेसिकली दिस इज व्हाट वी डिड इन दैट प्रॉब्लम, एंड हमें ऐसा ही कुछ वापस से करना है कि भाई we'll solve the same thing. And here if we go with the naive approach and take 3 loops to calculate, so we will have time complexity as big O of n cube. ठीक है. और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा. बट इफ वी जस्ट ऑप्टिमाइज इट अ लिटिल बिट वील गो फॉर बिग O ऑफ n स्क्वायर. याद है, यही किया था हमने, that if we use 3 loops we'll have big O of n cube, and if we kind of optimize it a little bit more we'll go for big O of n square. Understood? Yes or no? Give me a yes or a no, people. Yes. तो यार अब क्या होगा कि बेसिकली नाउ आई हैव in this question 2 more approaches, and those 2 approaches involve something like me taking an example that will, or an approach that will give me the time complexity as big O of 2n. तो ऑब्वियसली n स्क्वायर से तो छोटा ही होगा 2n. इफ यू जस्ट कंसिडर इन अ रैंडम थिंग, अगर आपका n 3 है, जस्ट रैंडम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो 3 स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन 2n कितना होता है 6. तो ऑब्वियसली 2n काइंड ऑफ बिकम्स स्मॉलर देन n स्क्वायर. So this time I'm going to use an approach that will give me a solution that is less than big O of n square, but it is big O of 2n. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, a b c a b c d b a.
दिस इज माई एंटायर क्या बोलते हैं इसको, एरे और स्ट्रिंग जो भी है। तो यार इसमें क्या होगा, दैट आई विल हैव टू काउंटर्स, ठीक है। काउंटर्स मतलब टू वेरिएबल्स विच आई विल यूज टू काउंट। वन आई कैन से एज अ लेफ्ट वेरिएबल एंड अ राइट वेरिएबल, ठीक है। एंड ऑल्सो आई विल बी कीपिंग ट्रैक ऑफ द लेंथ, तो आई विल हैव अ वेरिएबल दैट इज लेंथ, ठीक है। अंडरस्टूड? एंड in this I will be using a set to store all the elements of my sub array। समझ आया? तो इनिशियली एक L है, एक R है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, एंड दिस इज माई सेटअप राइट नाउ, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इन द सेटअप फॉर नाउ? और ये इनिशियली 0 है ऑब्वियसली। कोई प्रॉब्लम है सेटअप में? कोई डाउट्स? कुछ भी? एनी डाउट्स? नहीं है तो नो डाउट लिख दो। नहीं है तो नो डाउट लिख दो। डाउट्स हैं तो राइट द डाउट। इट्स अ वेरी क्लियर सेटअप। वाई सेट? बिकॉज वी आर गोइंग टू ऑब्वियसली टेक डिफरेंट एलिमेंट्स, तो उसको एक सेट में डाल देंगे। अभी इसके बाद एक और डेटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले, बट लेट मी, दैट्स अ सस्पेंस काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन दिस टाइम, तो लेट मी एक्सप्लेन लक्ष्मण, ठीक है। तो दिस इज समवॉट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एंड इनिशियली हम देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है, एंड वील स्लोली काइंड ऑफ go forward with it. So the first thing is we'll check the first element, it's A and it's a unique element. We'll put it in the set and we'll change the value from 0 to 1 क्योंकि first element is good, ठीक है। vote आ गया guys, the vote of did you like the stream has come. So if you liked the stream, give me a yes. If you did not, give me a no, ठीक है। अब क्या करेंगे? we'll go, once we have checked this element, we'll go to the next, means we'll do r plus plus, we'll have b, ठीक है। तो b is also not present in the set, तो हम जब भी whenever we push an element in the set, we'll check if it is present in the set or not, or if it is unique or not. So yes, it is unique, we'll push it in the set, we'll do l plus plus, and we'll go to the next. Again, c is also different, so we'll push it in the set, we'll do l plus plus. So 3 is there for now, and we'll again go r plus plus. We'll go to the next element and we'll check if it is there in the element in the set or not. It's there in the set, है ना? set में है वो element, है ना? It's there, it's present. So obviously we cannot directly push this element in the set. Yes or no? Give me a yes or no. We cannot directly push this element in the set. So from my L to this R, from L to R, I had 3, but now this 3 cannot be taken to 4, because if I take it to 4, I have repeating characters, है ना? So as soon as I get a repeating character, what am I going to do? I'm going to remove L from the set. मतलब Lth character will be removed. Once I remove that, I'll do L plus plus. ठीक है?
जैसे ही एक रिपीटिंग कैरेक्टर आया, so the value of L will be removed from my set no matter what the value is, and I'll shift L to the next position. And next position पे डालने के बाद what am I going to do is that I'm going to check कि क्या अभी भी R present है. Is my R still there? No. So I'll push R over here. I'll push R over here and I'll do R plus plus. है ना? Easy. I lost connection. Can you explain again? Yeah, I'll explain it once more, but try understanding from now and then I'll explain it again. Don't worry. Understood? Okay. अब आगे चलते हैं. Moving forward, I will have a situation in which I will have to move my L again because A is again, popped up in my array. है ना? Yes or no? Give me a yes or a no. Okay, कोई बात नहीं. So now what am I going to do is that I'm going to cut this out and I'm going to do L plus plus. And I'm going to check again. Is my R present? Yes, it is still there. यहाँ पे अभी भी A है. So I'm going to again cut the L out. And I'm going to do L plus plus. And I'm again going to check. क्या मेरा L यहाँ पे present है? Yes, it is there. And I'm again going to cut it out. And I'm going to do L plus plus. And now I'll check again. Now the set is empty क्योंकि A यहाँ पे था, ये cut out हो गया. तो जैसे ही मैंने देखा कि नहीं है तो I'll push L over here. I'll push R over here and I'll do R plus plus. Easy. So now I almost have an empty set which has only A in it. So there is one loop in which my R is traversing in the array and there is one loop in which my L is traversing in the array. So big O of n time complexity is taken by R and big O of n complexity is taken by my L. So in total I'm taking a complexity of big O of 2n. Understood? Same process will go on. I'll go R plus plus B हो गया, देखा नहीं है फिर से R plus plus C हो गया, देखा D भी नहीं है R plus plus, फिर से I saw that B is there तो वापस से L बार बार आगे जाएगा and then I'll keep cutting it out or blah blah blah. Same thing goes on again and again, but at the end of the day मेरा time complexity big O of 2n है. अभी भी I haven't come up to the base of big O of n. This is the best case scenario and this is what my interviewer expects from me. ठीक है? So this approach is not a bad approach, but it is not the best also. So my interviewer will be like, भाई big O of 2n तो दे दिया, अब आप इसको optimize करके big O of n दे दो. So you have given me a big O of 2n approach. Please optimize it to big O of n. Understood? Did you guys understand? Yes or no? समझ आ गया? Give me a yes or a no, people.
Okay, I'm still waiting for a yes or a no in the chat, but I am not getting any yeses or no's in the chat. तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो आप yes और no लिख सकते हो. 19 people watching. Can you explain once please? हाँ मैं बता रहा हूँ. देखो, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस अगेन बिकॉज ये वाली अप्रोच हम लीड कोड में नहीं लिखने वाले. ठीक है, दिस इज जस्ट एन अप्रोच विच आई एम we can ignore the constant. Yes, we can, but we have another approach which we can follow to have an optimized approach for this. ठीक है, हम इसी का एक optimized approach कर सकते हैं यहाँ पे. And how can that be possible? Is that we have one more approach for this same problem. ठीक है, same problem but approach is different. तो A, B, C, double A, B, C, D, A, B, C, D, B, A. ठीक है, तो वापस से we are going to solve this problem in a different manner, in a different approach to make that approach have the time complexity of big O of n. Understood? I'm not saying कि जो approach मैंने अभी बताई वो गलत है. You can do that also, but this approach will be different and this will traverse. Actually क्या हो रहा है ना, that my L is traversing in the array again and again. अब मतलब अगर यहां से लेके यहां तक जाना है तो L डायरेक्ट जंप नहीं मार रहा. L बार बार B, C, A, फिर अगर यहां से यहां जाना है तो पूरे array में ट्रैवर्स कर रहा है. I want it to jump. ठीक है, and this time when I want it to jump, my length is going to be the same. मेरा L भी होगा, मेरा R भी होगा. The only thing which will be different is rather than the set, this time I'm going to have a map. Understood? This time I'm going to have a map. Okay? समझ आ गया? Understood, guys? Okay. तो अब क्या होगा कि again I'm gonna do the same thing, that I will have R over here, length will become 1, and I will stuff this A inside my map, and not only A, with A I'm going to stuff the index of A. Then I'll do R plus plus. B is also not there, I'll put B. I'll do R plus plus. C is also not there, I'll put C. I'll do R plus plus. Now here is the main thing where you come and understand what we are going to do. Now R, this A is already present. Okay. So now, rather than removing this A and making our L go again and again to every point in the array, I'm going to update my index of A from 0 to 3. So my L takes a direct jump from here to here and it does not traverse over here. So it does not have to go from one place to another. It has to jump, and this from here from 0 becomes 3. Understood? When I go to the and once done, I'm going to do R plus plus. Now my L is not over here. It's over here. Again, A is over there. So my index is updated from here to here. Again, L comes over here. We'll go over here. Now my B is there,
but I'm going to update. I'm not going to move my L. So I'm going to update the index from 1 to 5 and L again comes over here. Okay. Now C goes from 2 to 6. D comes over here. And now we have our largest string. And we traversed around the array in only one go. And this gives you the time complexity of big O of n. Understood? Yes or no? So this approach that we did, this approach of L and R moving together, this is called as the sliding window approach. And the sliding window approach has a time complexity of big O of 2, and this is a new learning. There can be a question that the interviewer asks you, what is the time complexity of the sliding window approach of any problem? You'll say, sir, it's big O of 2n. He'll be impressed. Moving on, you will have this approach, and now this approach will give you big O of n. Same approach, rather than using a set, we are using a map and we are jumping one by one. Understood? Yes or no? समझ आया गाइस? LCS, longest common subsequence. Yeah, kind of. But yeah, this question is longest substring. Wait, let me just share my screen. I'm not sure about that, Dipesh. एक बार चेक करना पड़ेगा. एक मिनट रुको. Sliding window time complexity. देखो, जनरली इट्स बिग O ऑफ n, बट हमारे केस में बिग O ऑफ 2n है, तो वेरिएट करती है, वेरिएट होती है. ठीक है. आगे चलें, क्वेश्चन सॉल्व करें. अब तो अब क्या करना है, एक मैप बनाना है. एक लेफ्ट 0 से स्टार्ट होगा, एक राइट 0 से स्टार्ट होगा, और लेफ्ट टू राइट का हम रिटर्न कर देंगे फाइनल आंसर. So what does the user expect? It does not expect the substring. It just expects the length of the substring. ठीक है. So the length of the substring over here is ABC. So it gives you 3. Over here it's B. क्योंकि longest subst. If I just zoom it up, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे B है, 5 B's. तो there's only one B which we can take which will have a unique लेटर. यहाँ पे क्या है, ए बी सी, यहाँ पे वापस रिपीट हो गया, फिर ए बी सी, यहाँ पे वापस रिपीट हो गया, सी बी बी. सो द फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 3 बिकॉज ए बी सी इज विद द लेंथ ऑफ 3. ठीक है. तो यही हमें सेम चीज सॉल्व करनी है. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. इन दिस विल बी यूजिंग मैप्स. अब मैप जिसको नहीं आते कोई बात नहीं, we are going to use a map. You can learn maps later. ठीक है. अभी कोड देख लो, बहुत छोटा सा कोड है, मैप बाद में सीख लेना. ठीक है. हाँ, प्रोसेस समझ लो, मैप्स का लॉजिक अलग से देख लेना. ठीक है. ठीक है. ओके. तो ऑब्वियसली हमारा जो हैश मैप होगा दैट विल हैव कैरेक्टर्स एंड इट विल हैव इंटीजर्स ऑफ सब सीक्वेंस. ओ सॉरी, सब सीक्वेंस बोल रहा हूं. इंटीजर उसमें क्या होगा, हमारे मैप में इंटीजर क्या था,
कहाँ गया, हाँ. सो द इंडेक्स ऑफ आर कैरेक्टर इज द इंटीजर. तो हमारे मैप में दो इनपुट्स आएंगे. वन इनपुट विल बी द कैरेक्टर itself and the second input will be anything, the index. मैप का नाम क्या रखना है? MPP रख देते हैं. ठीक है. समझ आया? So we just declared a hash map and ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. वी आर जस्ट जैसे एरे डिक्लेयर करते हैं, व्हाट आर द इनपुट्स इन द एरे, इट्स एन इंटीजर एरे एंड इट विल हैव द साइज ऑफ दिस साइज एक्सेट्रा. वैसे ही मैप डिक्लेयर किया कि द मैप विल हैव टू इनपुट्स, वन विल बी द कैरेक्टर फॉलोड बाय द इंडेक्स नंबर एंड न्यू हैश मैप. मैप का नाम है MPP. दैट्स ऑल. फिर हमने एक इंट लेफ्ट लिया था, फिर एक इंट राइट लिया था, है ना. देयर वाज वन L एंड वन R. और उसके बाद हमने एक और चीज ली थी, इंट लेंथ. सो दीज वर द थ्री नंबर्स दैट वी हैड टेकन इनिशियली. यस और नो? गिव मी यस और नो पीपल, जल्दी से. ठीक है. हाउ मेनी वोट्स डिड वी गेट? 27 लाइक्स, 24. बहुत बढ़िया. अच्छा, 3 डिसलाइक है. So obviously we are going to traverse from first element to the last element of the substring. तो अगर देखा जाए, so what is the constraint of going from one place to another in this string? That our right should be less than n, where n is the size of the string. If the size of the string is 10, our r should go only till here. So while our right is less than n, that is it is till here, we will keep traversing or keep iterating in our substring or in our string or in our map. ठीक है. And we'll say while our right is less than n. Understood? Did you understand why we use this loop? Now we're going to use a lot of predefined functions of maps over here, so don't get confused. Give me at least give me a yes in the chat or a no in the chat, so that I know you guys are watching and you guys are not sleepy. Okay, सिर्फ दिपेश है, बाकी तो भाई साहब कोई नहीं है. कोई नहीं. So now we have to check that if our map contains a key, that is a new element. So we will, like it's a different element, we will shift our character to the right hand side. Okay, so if MPP contains a key, so contains key, so our string is S. Okay, so we are going to shift from left to right. ठीक है.
कोई इशू? So if our MPP contains a character which is different at the right, our left becomes the 1 to 1. कल आएंगे सर बच्चे, हाँ यार पता है मेरे को, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि एक मैथमैक्स फंक्शन होता है, मैथ डॉट मैक्स का एक फंक्शन होता है इन विच वी कैन गेट द कैरेक्टर्स फ्रॉम अ मैप, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमारे को हमारे मैप के अंदर स्टोर करना है राइट और उसका इंडेक्स। सो द राइट विल बी कैरेट राइट, इंडेक्स लेफ्ट वाला भी डाल सकते हैं। सो वी विल बी यूजिंग द मैथ डॉट मैक्स फंक्शन एंड वील गेट, सो वील से left is equal to math dot max function and we'll mpp dot get, that is we'll get value from caret right, ठीक है, +1 क्योंकि हमें एक इंडेक्स रिटर्न करना है एंड विल स्टोर इट इनटू आवर लेफ्ट, ठीक है। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो बहुत इजी है। एंड देन वील पुट दिस वैल्यू इनसाइड आर ओ माय बैड, ओके, I forgot to shift the, sorry, 1 second, I'll copy paste it. एक सेकेंड, आई डेंट रियलाइज कि मैं उसमें लिख रहा था, माय बैड, ठीक है। क्योंकि हैश मैप का अगर आप C++ कोड देखोगे तो इट इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट देन जावा। जावा इज रियली इजी टू पुट अप इन मैप्स, तो मैंने इसलिए वो वाला चूज किया, ठीक है। सो व्हाट इज गोना हैपन एक्चुअली इज दैट we will be taking the values and now we'll put our values in the map. हमने यही किया था ना, we had put up what did we put in our map? We put MPP, हमने क्या put किया था? We had put s dot caret right, है ना, and we had put up its index, यही किया था हमने, that if a is there तो a, 0, if b is there b, 0, ऐसा कुछ है ना। and also we'll do it here, ठीक है। and then now the last thing becomes is that we have to use the length. If you check this out, what did we do after putting it up? यहां पे हमने जब ये डाल दिया, we have to update the left also, है ना। and how do we update it? Again using the math.max function, we'll calculate the length. and what is the length going to be? It's going to be left minus right plus 1. if you check this out, the max length over here is रुको, if I just remove everything, okay, and if my left is over here and my right is over here, sorry, not here, left is over here and my right is over here, so it becomes what, 7 minus 4 plus 1 means 3 plus 1 4, and it is 1 2 3 4. so this is the formula, so that's what we'll put it up, same formula we'll be using over there. Yes, that is right minus left plus 1 will be our length. So we'll update our length, and our length will be equal to math dot max, where our length will become right minus left plus 1. okay, easy. and then once done, we are going to go to the next term and we are going to do right plus plus. and what are we going to return after this? We are going to return our
length. Easy? Understood, guys? So what are we doing over here? We have taken left, right, and length. While our right does not cross the string, our map should contain a key, and till it is containing a new key, we are going to get the right and the left value. We'll put the right value and the right index inside our map, and we'll update our length with right minus left plus 1, and we'll go to the next term. Let's run the code. I hope I didn't do any errors. Okay, there's some error. Okay, 1 second. Okay, I did not specify the length. So int n will be string dot length. My bad. Okay, so it's accepted. Our ABC whatever gives us the right output. Now we'll just do this and we'll submit our code and we'll see if it is accepted or not. Yes, it is accepted. Okay, understood? Easy, guys? I don't think it was much difficult. बहुत easy था. है ना? So 32 polls. Nice. समझ आ गया guys सबको? Everybody understood? Easy question, not difficult. Very easy. बताओ सबको समझ आ गया? Abish understood. Nice. It was very easy, not much. मतलब if you know maps काफी easy है. Maps नहीं आता तो थोड़ा difficult हो जाता है. But it's easy. ठीक है. So यार tomorrow we'll be doing some more good questions. ठीक है. बढ़िया बढ़िया questions करेंगे कल and it's a 4-hour marathon. So if you can get your friends, do get them up. मजा आएगा यार 4 घंटा लगातार live coding. Good session, good initiative. So I hope it turns out well. ठीक है. So if you did not like the stream yet, hit the like button. And कोई doubts है तो पूछ लो guys. Before I end the stream, I would like to solve all the doubts and go. So if you have any doubts, tell me. I'll solve them. And there are 35 votes on the stream, so you know you can like the stream. बताओ कोई भी डाउट है किसी को भी? बताओ बताओ बताओ. एंजॉय द सेशन. बाइनरी सर्च प्लीज टुमारो. हाँ दीपेश पक्का पक्का. मिनिमम 2 क्वेश्चन तो बाइनरी, 2 नहीं 1 क्वेश्चन तो पक्का रखूंगा बाइनरी सर्च का. ठीक है पक्का पक्का. बाय द वे आई हैव टेकन बाइनरी सर्च वीडियोस. इसी चैनल पे मेरे बाइनरी सर्च वीडियोस भी हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो जाके. ठीक है. और भी कोई डाउट्स है तो पूछ लो यार.
ओके, तो कोई डाउट नहीं है, तो आई गेस वी कैन रैप इट अप, है ना? रैप अप कर सकते हैं। यस। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर joining in guys, it was really a good session and मज़ा आएगा कल भी, because tomorrow I'll be solving a good amount of questions and a good level of questions. So I hope you guys join me up tomorrow. Thank you so much for joining in. Have a nice evening. See you guys.